Yesterday we were discussing about conflict. We had discussed the meaning of conflict, then we had discussed the sources of conflicts also. So two topics we had discussed in conflict management. Now we will be starting with causes of conflict. What are the different causes of conflict? Sit properly. What's your name? Mahesh. Sit properly. So causes of conflict we will be discussing now. So before we start with the session, a very important announcement is, I hope that everyone is aware of that on 8th of March, we are celebrating International Women's Day. And for that particular event, it is expected that all the students who have taken admission in first year shall remain present for the event. And you have to come to the college. The registration time will be 9 AM. ठीक है? 9 बजे सुबह सबको आना है. Come in. 9 बजे सुबह सबको आना है. So I hope that everyone is clear with that. So those who have joined today only, they shall also remember that it is compulsory for all the students. Please inform your friends also. Choice is not given to the student that I am working, so excuse. No excuse to working students also. The same strict message we will be posting on the WhatsApp group also by the afternoon. And we have suggested all the working students also to take leave for that particular day. So अगर मैं working student हूँ तो मुझे क्या करना होगा, कंपनी में लीव के लिए अप्लाई करना जरूरी है. उस दिन सबको आना जरूरी है. आपके कोई फ्रेंड है जो जॉब कर रहा है, आपको पता है, और वो नहीं आ सकता, उसे नहीं मैसेज मिला है, तो प्लीज उसे वहां तक मैसेज पहुंचा दीजिए. ठीक है? Yes. So causes of conflict, yesterday we had discussed that any difference of opinion or any fight or any dispute between two people or within a person can be called as conflict. So sources of conflict we had discussed, meaning of conflict we had discussed. Now we will be starting with the causes of conflict. क्या कारण होते हैं conflict के? That we are going to discuss. Very simple causes are there, which most of us are aware of all these conflicts, all these causes. So, mainly the causes are divided into 5 parts. As you can see here, that there are conflicts related to data, which are categorized under data conflict. Some causes are covered under interest conflict, value conflict, structural conflict, and relationship conflict. Now, what these are, that we will be discussing in detail. So, under data conflict, why the conflict arises? Why the difference of opinion arises? Why the dispute arises, or why the fight arises? That we are going to discuss in data conflict. Data is information. We all are aware of meaning of data is information. Now, lack of information, misinformation, differing views on data relevance, and differing interpretation. These are the small things which can be included under causes of conflict under data conflict. So, lack of information. What is lack of information? Lack of information, it is very simple. What is lack of information? Lack means what? कम information. किसी चीज की कम information. So that could be one of the reasons for conflict. So it is always suggested that the information should be shared to all the employees of the organization related to how much profit the organization is making, what are the products of the organization, who are the customers of the organization. So the information which each and every employee should be aware of should be shared with all the employees. If less information is shared, then
there may be chances of conflict. Now suppose the organization, in actual, the organization is under loss for a particular year. For the last 3 years, the organization was earning profit. Now, this information is not shared with the employees that currently the organization is undergoing loss. So, employees are under the impression that for the last 3 years, our company was making profit. So, this year also, the company is in profit. On the basis of that information, they may come up with a demand related to increase in salary. Because their information, their demand is based on previous information. So that is lack of information. Lack of information. Why it is lack of information? Because the current situation of the company is not shared with the employee. As it is not shared, they think that the company is in profit for the last 4 years. So this is the time that company should give them increment or increase in their salary. And that is because of lack of information. So information की कमी की वजह से भी कई बार conflicts हो सकते हैं organization के अंदर. Next is misinformation. Misinformation means गलत information. अगर गलत information दी गई तो भी conflicts हो सकते हैं. कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब जानबूझ के एम्प्लॉइज को बताया जाता है कि कंपनी बहुत लॉस में है. क्यों मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? बिकॉज द कंपनी इज अवेयर दैट इफ राइट इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड विद द एम्प्लॉय विल कम अप विद देयर डिमांड्स ऑफ इंक्रीज इन सैलरी. सो दैट इज व्हाई दे गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय. बट द डे व्हेन दिस थिंग will come in picture among the employee, when the employees will come to know that whatever data was shared was wrong, then again there are chances of conflict. Differing views on data relevance. Whatever information the company is sharing should be transparent, should be clear, and should be easy to understand. If it is difficult to understand, then there are chances of conflict. अब सपोज एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज को पता ही नहीं चल रहा है, जो भी डेटा शेयर किया गया है उस डेटा से पता ही नहीं चलता है कि प्रॉफिट में है कंपनी या लॉस में है, और एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट होने वाला है या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की ही नौकरी जाने वाली है. अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Now the next one is interest conflict. Now interest conflict means perceived or actual conflict over interest. Next is procedural interest and psychological interest. What is interest? Here the meaning of interest is not what we have learned in finance, in accounting. Their interest is different. Here interest is different. Here interest is what? क्या है interest? यहाँ पे क्या मतलब है interest का, बोलो. Very simple. Interest is what? जो अकाउंटिंग में आपने इंटरेस्ट पढ़ा है वो अलग है, यहाँ पर इंटरेस्ट अलग है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट. इंटरेस्ट इज व्हाट? इच्छा एंड व्हाट और क्या? हाँ हाँ नहीं, जोर से बोलो. हाँ, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना. ओके. और क्या है? इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज दैट? इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट. एखादा पर्सन ऐसा है उसको काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, वो ऊपर प्रेशर डाले करो, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ओके. उस काम के लिए उसको हायर नहीं किया, ओके. तो दूसरा काम दे रहे हैं. हम्म. तो अगर अब इंटरेस्ट नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ये इज नॉट माय प्रॉब्लम.
हाँ, so that is called as what? Interest conflict. Here the person feels that my interest is different and the responsibility given to me is different. If there is a clash between that, then there can be a conflict. Suppose the person has done MBA in finance and the person is best suited for finance department. Now, as there is a immediate vacancy in human resource department, as somebody, management trainee or management executive from HR department has gone for leave and there is a requirement in HR department. Suddenly, if the company shifts this finance person and fixes that finance person to HR department, there can be interest conflict because the person has different interests, and now if the person is forced to do the job in other department, then there can be interest conflict. Now, many times we hear multitasking. What is multitasking? हाँ, पूरा शॉप ही आप संभालो. That is possible if the business is very small. If the business is large, then it is not possible at all. It is not possible. Multitasking doesn't mean that a MBA student who has done, say, financial management specialization, he is transferred in human resource department, then he is shifted to, say, operations department, then he is shifted to quality department. That is not multitasking. Multitasking means that in the same department, he should be able to perform different tasks. That is called as multitasking. So multitasking का ये मतलब नहीं है कि एक आदमी ले लिया, जिस भी डिपार्टमेंट में कम है उस आदमी को उस डिपार्टमेंट में घुसा दिया. कि आजकल तो मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो तेरे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए. दैट इज नॉट मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग मीन्स दैट सिमिलर टाइप ऑफ जॉब यू शुड बी डूइंग. ठीक है, अकाउंट्स का आपको जॉब आना चाहिए, ऑडिट कैसे किया जाता है आपको आना चाहिए, टैली में एंट्री कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए. सो इफ अ पर्सन कैन डू ऑल दीज थिंग्स, देन वी कैन से दैट पर्सन इज a multitasker. So that is multitasking. So here, if this happens, that the person's skills are suited for some other place and still the person is shifted to another place, then there can be a interest conflict. Under that, psychological conflict is very important. Psychological conflict. The person is interested in performing challenging jobs and the person is given monotonous type of job where use of brain is not required. There are certain jobs. Now you might be aware of that the highest attrition rate is in which type of job? IT related jobs are having the highest attrition rate, and that too in BPO sector. And under that also the voice services and the data entry jobs, they are having the highest attrition. क्यों सबसे ज्यादा attrition BPOs में है? क्योंकि अगर आप वॉइस में है तो मोनोटोनस हो जाता है. आपको कस्टमर का फोन अटेंड करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है, हाउ मे आई हेल्प यू बोलना है, उसके बाद उसका प्रॉब्लम रहेगा वो आपको बैठे बैठे सॉल्व करना है. रोज अगर मैं यही काम करूंगा तो धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट या मेरी इफिशियंसी कम होने लगती है. हर व्यक्ति ये चाहता है कि काम में मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा तो भी चैलेंज होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए. मोनोटोनस जॉब रहेगा तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा और बहुत जल्दी आप क्या करेंगे, वो जॉब छोड़ देंगे. दैट इज द मेन रीजन व्हाई द
BPOs are having highest attrition rate. Number of employees leaving the job in BPO companies is highest, and that is the common reason, because the psychological interest is missing. We all are human beings. We are not machine. Machine अगर रहेगी, robot को अगर बताया कि डेटा एंट्री करना है, तो जितनी इफिशियंसी उसकी डे 1 पे है, उतनी ही इफिशियंसी उसकी 5 साल के बाद भी रहेगी। पर अगर इंसान को हम बोलेंगे तो फर्स्ट डे में जो इफिशियंसी है, शायद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी उतनी इफिशियंसी हमारी नहीं रहेगी। दैट इज व्हाई वेरियस फैसिलिटीज, वेरियस से benefits, various incentives are given to the employees who are working in BPO. So that is related to interest conflict. Next one is value conflict. Now value means different ways of life, ideology, worldview, etc. Different criteria for evaluating ideas. Value system. From the childhood, when we are growing up, we follow certain values, certain beliefs, which we receive from our parents. And we start practicing those values in our life automatically. Very simple example. Since childhood, we are taught that honesty is the best policy. And automatically, we start accepting that principle. Because since childhood, we know that stealing is not good. It is not acceptable. चोरी करना बुरा काम है. हमेशा अच्छा ही करना चाहिए. हमेशा सच ही बोलना चाहिए. This we have learned while growing up. Our parents used to teach us. Our teachers used to teach us, and slowly we accept that fact, accept those values, and we start implementing those values. If there is a clash of values in the organization, then there can be conflict, and that is what we are now going to discuss. Value conflict, different ways of life and different ideology. एक एम्प्लॉई है जो अभी तक जो उसके फैमिली का वैल्यू सिस्टम था, वो क्या है कि जो भी है मेहनत करने से ही हम लोगों को जो भी प्रॉफिट है या इंक्रीमेंट है या प्रमोशंस है, यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स इन लाइफ विथ हार्ड वर्क ओनली. दैट इज द बिलीफ सिस्टम और वैल्यू सिस्टम ऑफ वन पर्सन. The other person may have been brought up in some other value system. There, that do whatever you want to be successful. Whether right or wrong doesn't matter. Success only matters. ऐसा भी कुछ फैमिलीज में होता है कि वहां पर बच्चे को पहले से ही एग्रेसिव बनाया जाता है कि फर्स्ट आना है, जीतना है, चाहे कैसे भी, बाय हुक और क्रुक. You have to win. You have to come first. So if different values are given to different people since their childhood, they start following those values throughout their life. Now people coming from different parts in an organization, when they start working together and when they start showing different values, then if my values are different and my teammates values are different, there is going to be a clash. मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेहनत करूंगा तो ही प्रॉफिट मुझे मिलेगा या तो ही मुझे सक्सेस मिलेगी. मेरे जो टीममेट है वो बोलता है कि नहीं, देयर आर शॉर्टकट्स आल्सो फॉर सक्सेस. तो अगर ऐसे दो लोग टीम में काम करते हैं तो देयर आर चांसेस दैट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. फ्रेंड्स हम लोग कैसे बनाते हैं? जब हमारे इंटरेस्ट एक जैसे रहते तभी फ्रेंड्स बनते हैं. ऐसा होता है क्या
एक फ्रेंड को एकदम अलग इंटरेस्ट वाला फ्रेंड है और एक एकदम अलग है और वो दोनों बहुत एकदम क्लोज फ्रेंड्स है, ऐसा होता है क्या कभी? तो जब तक हमारे वैल्यूज मिलते नहीं, जब तक हमारे इंटरेस्ट मिलते नहीं, तब तक हमारी फ्रेंडशिप भी नहीं होती। पूरी क्लास 138 स्टूडेंट may be studying in the same class, may be sitting in the same class, may be attending all the programs, all the lectures together, but we cannot be sure that all the students will be having very close relationship, close friendship with each other. ऐसा होगा क्या कि पूरे 138 स्टूडेंट एक दूसरे से एकदम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है? ऐसा होता है क्या? नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? बिकॉज of different values, because of different interests. We choose our friend, right? Brother, sister, जो बाकी के रिलेशंस हैं, वो वहां पर हमारे पास चॉइस नहीं रहे, बराबर? वहां पर हमारे पास चॉइस है क्या? मेरी बहन कौन होगी, मेरा भाई कौन होगा? नो चॉइस। मेरे फादर कौन है, मेरी मदर कौन है? नो चॉइस। बट मेरा फ्रेंड कौन होगा? चॉइस है। और वो हम लोग कैसे चूज करते हैं कि मेरा इक्वेशन मेरे फ्रेंड के साथ मैच होता है क्या, मेरे वैल्यूज और उसके वैल्यूज मैच होते हैं क्या? क्लास में सब इंडक्शन के दिन मिले, सबने एक दूसरे से बातचीत की, सबने एक दूसरे के नंबर्स लिए, एक दिन फोन पे बात हुई, एक दिन पर्सनल बात हुई, धीरे धीरे अपने आप छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लग जाते हैं। क्यों ये बनते हैं? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जिसके साथ जुड़ता है, हमारे वैल्यूज जिसके साथ जुड़ते हैं, वी गेट अलोंग विद दैट पर्सन वेरी इजी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी फॉर्म ग्रुप्स। अब फ्रेंडशिप इज इनफॉर्मल ग्रुप वी हैड स्टडीड, सो अ ग्रुप विच इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप इज इनफॉर्मल ग्रुप। नाउ आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, again the other person is also working in the same organization. I do not have choice. He has been selected by the organization, I have been selected by the organization, so we both are working. I am having different values, he is having different ideology. So in this case, it is expected that we should both come together and work in a team as a team. But as we both are human beings, it becomes difficult, and that is the reason why many teams fail. ऐसा नहीं है कि टीम मेंबर्स में इंटेलिजेंस कम है या उनके पास स्किल्स कम है या उनके पास नॉलेज कम है, पर एक साथ मिलकर काम करना भी इतना आसान नहीं, वो भी मुश्किल। अभी अगर आप लोगों को टास्क दिया कि ठीक है, नीचे बैठ के आपको ग्रुप में ड्राइंग बनाना है, एक बोलेगा कि ऐसे बनाना है, एक बोलेगा ऐसा बनाना है, सब लोगों के शायद विचार मिलेंगे नहीं, तो कुछ लोग शायद छोड़ के भी चले जाएंगे, जाओ तुम लोग कुछ भी करो, मैं चला, मैं दूसरी जगह जाके बना लूं। ऐसा भी होता है। दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लैक ऑफ वैल्यूज और clashes of values or clashes of interest. So that is the reason why conflicts may occur in the organization because of different ways of life or ideologies or worldview. Right? Now, next one is structural conflict. Now, structural conflict means the conflicts which are related to the hierarchy of the organization is called as structural conflict. Every organization is having a structure. So in this unequal authority, unequal control of resources and time constraint, structural authority conflict. So any conflict which is related to the hierarchy of the organization. So it is said that hierarchy should be fixed, structure should be fixed, and the structure should be known to all the employees. सारे एम्प्लॉइज को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर, कि सबसे ऊपर जनरल मैनेजर है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, उसके नीचे मशीन ऑपरेटर्स है, और सबसे नीचे फिर
जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर should be known to each and everyone. Not only known to each and everyone, it should be implemented as it is in the organization. Then there are less chances of conflict. Now what will happen? Suppose general manager is the highest authority. Now a very close relative of general manager is appointed as assistant manager. Then what will happen? It may happen that this assistant manager is having more power than deputy manager or then manager. Why? Because he is closely related to the general manager. जनरल मैनेजर के बेटे को अगर असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया और असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट जनरल मैनेजर के पास चला जाता है, वो किसी की बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका फादर जनरल मैनेजर। एंड दैट विल अराइज conflict related to structure. If the structure is properly implemented, every organization is having structure, that is common, but whether that structure is implemented in the organization properly or not, that is a question. कि अगर structure implement properly नहीं होता, employees को पता चल जाएगा कि assistant manager direct जनरल मैनेजर के पास जा सकता है, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है मैनेजर से, उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है डेप्यूटी मैनेजर। देन इट इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड द असिस्टेंट मैनेजर, बिकॉज मैनेजर विल फील दैट आई एम मोर पावरफुल देन यू, whereas more powerful is assistant manager. Why? Because his father is heading the organization. If such thing happens, then there will be conflict, and that conflict will be called as structural conflict. And the last type is the relationship conflict. In that, miscommunication, strong emotion, stereotyping, and repetitive negative behavior. That is relationship conflict. Relationship. In every organization, when employees are there, it is expected that the relations between the employees should be good, should be cordial, should be smooth. सब लोगों के बीच में जो संबंध है वो अच्छे रहने चाहिए, तभी कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है. अगर नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगी. और कभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन. बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कि सारा जितना भी ध्यान है वो झगड़ों के ऊपर जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी धीरे 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 कम होने लगता है. एंड दैट इज relationship conflict. Now the reasons for relationship conflict is miscommunication, strong emotion, stereotyping. What is stereotyping? We have discussed that. Stereotyping is what? Stereotyping is what? क्या है? What is stereotyping? Miscommunication, everyone is aware of. Stereotyping is what? Those who were present in the last lecture when we were talking about, say, personality. Under personality, we have discussed this term, stereotype. Stereotype is what? Stereotyping is what? We are talking about relationship conflict.
Yes, what is stereotyping? Okay, no problem. We will move on to the next. Now we will discuss the types of conflict. There are some types of conflict that we are going to discuss. First, we will be discussing inter-organizational conflict and intra-organizational conflict. Inter-organizational conflict. As the name itself says, inter-organizational conflict means the conflict, the difference, the dispute which exists between two or more organizations is called as inter-organizational conflict. When there is a conflict between two or more organizations, that conflict will be called as inter-organizational conflict. Next one is intra-organizational conflict. Intra-organizational conflict is a conflict which exists inside the organization. Suppose एक X organization है, अगर X organization के अंदर कोई conflict होती है, तो that conflict will be called as intra-organizational conflict within the organization. A conflict which is existing within the organization will be called as intra-organizational conflict. Now, under intra-organizational conflict, again, there are two types of conflict. One is called as interdepartmental and the other one is called as intra-departmental. Interdepartmental is what? हाँ? बोलो जोर से. इंटर दो डिपार्टमेंट के बीच में या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट के बीच में. वेरी गुड, वेरी गुड. सो परचेज डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बीच में अगर कोई झगड़ा है, परचेज डिपार्टमेंट बोलता है कि आपका रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं आता, इसीलिए हमारे को पार्टी शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम होता है रॉ मटेरियल के लिए. या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बोलता है कि हम लोग ऑर्डर्स आपको जल्दी देते हैं पर आपका ऑर्डर जल्दी पास नहीं होता, रॉ मटेरियल लेट आता है, इसीलिए हमारे ऊपर प्रेशर आता है. सो इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन two or more departments within an organization, that type of conflict will be called as interdepartmental conflict. Intra-departmental means, what is intra-departmental conflict? In the same department if the conflict is there. Very good. So in the same department. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 4 लोग काम करते हैं. एक को लगता है कि बाकी के जो 3 हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, मुझे ही ज्यादा काम करना पड़ता है. बाकी के 3 मैनेजर से क्लोजली रिलेटेड हैं, इसीलिए उनको ज्यादा प्रेशर नहीं है पर मुझे ज्यादा प्रेशर है. अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रा डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट. Now under intra-departmental conflict, again there are 2 types of conflict. One is called as intergroup and the other one is called as intragroup. Intergroup again very simple, within 2 groups. 2 groups are there, then there it will be called as intergroup conflict. Intragroup means one group is there. If there is a conflict within that group, that will be called as intra-group conflict. Now again intra-group is divided into 2, interpersonal and intrapersonal. Interpersonal means, girls, interpersonal means, girls, intra-departmental, intergroup and intragroup. Intragroup is divided into 2, interpersonal and intrapersonal. So what is interpersonal and what is intrapersonal? Girls.
what is interpersonal and what is intrapersonal? चलो गर्ल्स बोलिए, what is interpersonal and what is intrapersonal? Any guesses? Interpersonal conflict and intrapersonal conflict. बोलिए. Yes, interpersonal conflict. What is interpersonal and what is intrapersonal conflict? Come on, fast, girls. अरे मार्क्स थोड़ी डिडक्ट होने वाले हैं. बोलो हाँ होगा या ना होगा, या तो सही होगा या गलत होगा. बोलिए क्या है जल्दी से. What is interpersonal and what is intrapersonal? Boys are ready with the answer. Girls, बोलिए जल्दी. What is interpersonal? Yes, Shraddha. What is interpersonal? बोलो. What is interpersonal? It is not that difficult. No. चलो जल्दी से बोलो. Interpersonal and intrapersonal. The meaning is same. Interdepartmental, intradepartmental. Intergroup, intragroup. यहाँ पर भी वैसा ही है ना. Interpersonal and intrapersonal. Interpersonal conflict means the conflict which exists between two or more persons is called as interpersonal conflict. दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है या कोई डिस्प्यूट होता है या किसी भी चीज को लेके कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, that will be called as interpersonal conflict. Next is intrapersonal conflict. So exactly opposite of interpersonal is intrapersonal. Intrapersonal means, now what is intrapersonal? Very simple. Intrapersonal is what? Intrapersonal is between you and yourself. Same group में अगर conflict होगा तो that is called as intrapersonal conflict. Yes? फिर क्या है? No, girls. Interpersonal is between two or more persons. Then what is intra? In same person. Very good. In same person. That is intrapersonal conflict. In transactional analysis, we had discussed this. The 4 areas of a person that we had discussed in transactional analysis. So same is the case, same principle is applied here also, intrapersonal. When there is a conflict within a person, then that conflict is called as intrapersonal conflict. The most dangerous type of conflict is intrapersonal conflict. मेरे वैल्यूज अलग हैं, पर जो मेरा काम है वो उसके खिलाफ है. That is intrapersonal conflict. From within, I feel that I should not do this thing, but my job says that I have to do it. That will create intrapersonal conflict. Conflict within a person. A person who is dead against giving bribes, but for getting a tender, if he is in a position where the company gives him instructions that you have to pay something under the table to the official who will be
finalizing the tenders. Now, for the company, the person has to do this because it is his job. But from within, he is against that. And that type of conflict, which is inside the person, that type of conflict is called as intrapersonal conflict. So it is said that conflicts are positive as well as conflicts are negative. It is not that all the conflicts are negative in nature, but there are certain types of conflicts which are called as positive conflicts, and there are conflicts which are called as negative conflicts. तो अगर एक टाइप की कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तो वो पॉजिटिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है. दूसरी कॉन्फ्लिक्ट रहेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं. Now the good conflict means that if the organization is providing an environment where the objections of the employees are also noted. It is not that all the decisions which are taken by the organization will be very easily acceptable to all the employees of the organization. There can be some decisions which may be not readily acceptable by the employees. In that case, if the environment in the organization is such that if you are having any resistance, if you are against a particular say, rule, you are allowed to raise your objection. कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये रूल आपके लिए इंटरेस्ट में नहीं है या आपके अगेंस्ट है. So here what is happening, they are giving an opportunity to raise your conflict, to raise your objection. So that type of conflict is good for the health of the organization. नहीं तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप. कोई अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं कर सकता. कर सकता है क्या, अगर हिटलर के जैसा अगर शासन रहेगा, माइट इज राइट अगर प्रिंसिपल रहेगा, तो फिर कोई भी अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रेज नहीं कर सकता. फ्रॉम इनसाइड आई फील दैट दिस इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और this is not good for me also. But as I know the manager is very strict, I know that if I raise my objection, I may lose my job and I desperately need that job. Then what I will do is, I will accept that decision, but I will not accept that decision wholeheartedly. And if you are not accepting any decision wholeheartedly, automatically you are not going to devote your 100% energy in the job. हम लोग कब अपना खुश होके या पूरा एनर्जी से जॉब करेंगे, कोई भी काम करते हैं जो काम हमें दिल से पसंद है, उसमें हमारा 100% होता है. अगर मुझे पढ़ाई नहीं पसंद है, मेरे माँ बाप बोलते कि नहीं 4 घंटा पढ़ाई करनी ही है, किताब खुली रहेगी, सब होगा, पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे 4 घंटे में उतना समझ में आएगा कि जितना समझ में आना चाहिए. Why? Because I do not like from inside. मुझे अगर पसंद है तो शायद 1 घंटे में मुझे उतना समझ में आएगा जितना किसी को 4 घंटे में भी नहीं आए. Why? Because I have interest in that. The same is the case with conflicts also. So it is not that conflicts are always negative in nature. Conflicts can be positive also. Conflicts are positive only if the organization is creating such an environment that if you are having any difference of opinion, you have every right to register your difference of opinion. It is not that all the whatever resistance is there or all the objections will be accepted. But at least if such situation is there, employee will feel that okay, if I am having some difference of opinion, somebody is at least listening to that difference of opinion. And if that difference of opinion is serious, is genuine,
then it is accepting, the organization is accepting that also. If such situation happens, then the conflict is good. But if there are difference of opinion, but the organization is totally ignoring those difference of opinion, then ultimately, in the long run, what will happen? The efficiency of the employee will decline. Employees को इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी जबरदस्ती उनके ऊपर ये किया गया, तो क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी है, जो इफिशियंसी है, जो इंटरेस्ट है, जो एनर्जी है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और वो कम हुई कि अपने आप कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का ग्रोथ कम होने लगता। सो हियर द ऑर्गेनाइजेशन always has to remember that as we are dealing with human beings, there can be some decisions which will not be readily acceptable to all the employees. In that cases, the opportunity should be given to the employees to raise their objection. If such situation is prevailing in an organization, there are chances that the organization will grow in the near future. क्योंकि एम्प्लॉइज को पता है कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन लेती है जो किसी एक व्यक्ति के या किसी ग्रुप के अगेंस्ट है, so that group is given an opportunity that you go and talk to the concerned authority, and if your problem is genuine, definitely it will be solved. If such situation is there, then the conflict is possible. But अगर डिक्टेटर टाइप का मैनेजर है जो ये सोचता है कि I am working here for the last 5, 6, 10 years, I am sitting on the chair of a manager, I have more authority than you, so whatever I have decided has to be implemented. There is no question of raising any objection. If such situation exists in the organization, then in that case we can say that the conflict will be negative in nature. तो वहां पर conflict negative हो जाएगी, और वहां पर organization बेशक शॉर्ट रन में उसको फायदा हो जाए, पर लॉन्ग रन में उसको फायदा नहीं होता, because we are dealing with human beings. अगर हम लोग मशीन्स के साथ डील करेंगे तो there is no question of conflict at all. दो रोबोट काम कर रहे हैं और एक डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, रोबोट के बीच में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है क्या? क्योंकि प्रोग्राम फीड कर दिया है, सॉफ्टवेयर डाल दिया है, स्विच ऑन कर दिया, तो जो प्रोग्राम फीड है उसी के हिसाब से वो रोज काम करने वाला रोबोट, दोनों रोबोट वैसे ही काम करेंगे। ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोग वो दो एम्प्लॉइज को भी लगा सकते हैं क्या कि जैसे ही वो आए उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, एक चिप उनके ब्रेन में डाल दी, अब कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई वैल्यूज नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं। इन नियर फ्यूचर वी आर नॉट श्योर। हाँ, नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो भी सकता है तो हमें नहीं पता, पर अभी तक तो ऐसा नहीं है। देयर आर स्टडीज गोइंग ऑन वेयर द पर्सन विल बी एबल टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग ऑल्सो। ऐसा भी हम लोग टीवी पे बहुत देखते हैं ना, हिस्ट्री, नेशनल ज्योग्राफी, अगर आप देखते रहेंगे तो उसमें काफी सारे प्रोग्राम आते हैं कि जहां पर चल रहा है अभी कि आपके ब्रेन में जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो भी शायद अभी बहुत नियर फ्यूचर में ऐसा भी कुछ डिवाइस लगा लेंगे कि जिससे आप क्या सोच रहे हैं वो इमीडिएटली पता चल रहा है। ऐसा आगे पता नहीं क्या हो सकता है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो if we are dealing with human beings, we have to deal with conflicts also. We cannot remove conflict. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर से या अपने इन्वायरमेंट से उसको मिनिमाइज कर सकती है। जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो भी एम्प्लॉइज में झगड़े होते हैं, उसको कम किया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर कम कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स
they are using positivity from the conflict. But if the conflicts are ignored, then it will be harmful for the organization in the long run. So there are conflicts which can be called as positive conflict. There are conflicts which can be called as negative conflict. So all the organization has to try for how they can make best use of conflict, right? So that was related to our chapter number 4, related to this conflict and group. If you have any query, please go ahead. Otherwise, from next, we will be starting with the final unit. And the last, stereotyping. What is stereotyping? We have discussed. I thought that somebody will give the answer. हाँ, जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा. क्या? हाँ, नहीं. और stereotyping. When we were discussing types of personality, at that time we had discussed 2 types of personality. One, personality showing halo effect. The other type is showing stereotyping. What is that? What was that? Try to recall. Recall कर सकते हैं ना? मशीन्स रहते तो कितना इजी रहता है. जैसे हम लोग फाइंड एफ करते हैं, है ना, और कुछ भी डाला तो इमीडिएटली एक्सेल में, है ना, एक्सेल शुरू हो गया ना आप लोगों का, तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा. अभी जिसको पता है एक्सेल में कुछ भी डेटा है, आपने फाइंड एफ कंट्रोल एफ किया और उसमें डाल दिया, तो वैसा ही है. स्टीरियोटाइपिंग मतलब क्या? ट्राई टू रिकॉल. अब भी पिछले हफ्ते ही तो किया. Predetermined mindset. Stereotype means what? किसी को भी नहीं, कोई भी नहीं था लेक्चर में. What is halo? Halo effect of personality. वो बताओ. Stereotyping नहीं, halo effect नहीं. Type A personality, type B personality. Huh? What is type A personality? What is type B personality? What is extrovert? What is introvert? अब ये तो बताओ. What is extrovert and what is introvert? Type A personality, type B personality. We had studied in transactional analysis also the 3 ego states we had discussed of life. What is extrovert? What is introvert? Predetermined what? Predetermined mindset is stereotyping. जब किसी व्यक्ति के बारे में हम एक पहले से ही अनुमान लगा के चलते हैं, that is stereotyping. The person, a student who always wish me, good morning sir, good afternoon sir, I will feel that this student is one of the best student in the class. I will ignore other aspects of the student. In this week, we had planned management quiz also. But looking at this scenario, I don't think that we can go ahead with management quiz. कल का क्या पढ़ा है वही अगर पता नहीं तो फिर ब्रांड्स का आप लोगों को कैसे पता चलेगा? What are the products of P&G? What is P&G?
We are talking about, हाँ, अच्छा पूना गाडगिल और PNG, a famous multinational chain, multinational company, PNG. What is J&J? Very good, very good, very good. What is PNG? अभी और सिंपल इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन रखेंगे मैनेजमेंट क्विज में? PNG अगर MBA स्टूडेंट को नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा. What is HW? A famous company, IT company, HW. What is HP? Another famous IT company. HP के लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं ना. क्या है HP मतलब? ड्रॉप करना पड़ेगा हमारे को आइडिया. क्या HP मतलब क्या? What is HP? What is PNG? Today is 4th, na? 4th. So, in the first week of April, you will be having your final examination. The date will be finalized very soon, and as soon as we receive the notification from the university, we will post on the WhatsApp group and we will immediately share it in the class also. So please remember, very few days are remaining. So start studying. ठीक है? तो अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मुश्किल है. ठीक है? So we will stop here. So in the next session, we will start with the last chapter. What is the last chapter of organizational behavior? Anyone who has checked the syllabus? Last chapter of organizational behavior. Stress at workplace. है last chapter. बोलो boys, girls. Last chapter of OB. What is the last chapter of organizational behavior? नहीं? ठीक है. So we will start with last chapter, and very soon we will be completing this portion of organizational behavior. Then the remaining 2 chapters of legal aspect of business we will complete. So first we will try to complete the portion of organizational behavior, and after that we will complete legal aspects of business also. Then if you are interested, then we can have revision in the classroom also, or we will share all the details on your on the website. You can download from the website also, right? So now we will have a break for lunch, and at 2